brief training. And it was crazy. उस वक्त भी Telenor office में हुआ था, and it was for women in tech basically. So a little about already अरूज ने काफी बता ही दिया है. कभी जब introduction होता है इस तरह का तो you don't really you like, is she talking about me? Have I done this much? So there's a lot of imposter syndrome. For those who don't know imposter syndrome क्या होता है, वो ये होता है कि आपको अपने ऊपर इतना डाउट होता है कि मैंने ये किया है, ये मैं कर सकती हूँ, मतलब ये am I supposed to be here? I was listening to one of the stories. I just logged in. So this guy who was told that he's not going to get the job and he should change. I before you could even say that, I was like, hey, this guy should have said कि मैं करके दिखाऊंगा और देखना तुम. And I was so happy that you did that. So because हमारी society इस तरह की है, जिसमें हमें एक sort of तमीज सिखाई हुई थी कि humble रहो. इसको एज अ गुड थिंग लोग सोचते हैं ना कि हम्बल रहना चाहिए. बट आई रियलाइज्ड ओवर टाइम एंड आई टॉट दिस टू माय पेरेंट्स एज वेल कि हम्बल रहने से यहाँ कुछ नहीं होगा. एज अ वुमन in a very male dominated industry, I don't even have to talk about my achievement. I have to scream that out for people to recognize कि अच्छा इसने कुछ उखाड़ा है, जिंदगी में कुछ किया है. So please, my first and foremost two things that I'd like to tell you is that let go of your imposter syndrome. ठीक है, ये छोड़ दो कि मैं इतना कर सकती हूँ या नहीं है. Just believe, go for it. ज्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, you'll get a lesson out of it. And the second thing I'd like to say to you is just के जो है ना, don't just believe in yourself and stop being humble. Please अपनी accomplishment को चीखो चिल्लाओ, दुनिया को बताओ. You need to scream in a world which is already so noisy for people to recognize what you've done. So that's what I'll start off with. So I'll tell you a bit about my journey, and I hope I could inspire you. Or next time I'm hoping कि CEDBA program में और भी पाकिस्तानी लड़कियां जाएं. So basically, let me first tell you about this, what I do and how I came across this program. So I graduated from NCA in 2011. मैं बहुत बुढ़ी हूँ, मैं advertising industry की अपने आप को अभी dinosaur कहलाती हूँ. But thankfully अल्लाह का शुक्र है कि इतनी इज्जत है कि I was working with a team of young people and I was like, यार, you guys need to teach me about this TikTok and Gen Z and everything, because I'm like a dinosaur in the industry. So this kid said, you're not a dinosaur, you're Godzilla in our industry. So you're going to be a legend no matter what. So, I've been in advertising for almost more than 10-12 years. मैंने जो last अपनी job थी वो थी वीडियो पाकिस्तान के साथ. Those who don't know, it's one of the biggest advertising agencies in the world. I was working on Pepsi and Lay's, और जिनको पता नहीं एडवर्टाइजिंग की क्या हमारी जॉब होती है, तो हमें होता है कि हमें एक ब्रीफ आती है, उसमें लिखा होता है कि भाई हमारा ये नया प्रोडक्ट आया या हमने ये प्राइस पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है. अगर आप सबको याद हो कि पेप्सी पे 5 रुपए कम हो गए या 10 रुपए कम हो गए, वो ब्रीफ हमें ही आती थी. हम फिर उस पर बैठ के सोचते थे कि अच्छा इसको किस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे एक टीवीसी में, विच इज टेलीविजन कमर्शियल, या उसको डिजाइन में किस तरह, बिलबोर्ड्स में किस तरह दिखाएंगे, उसकी टैगलाइन क्या होगी. इस तरीके की चीजें हम फिर डिस्कस करके एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाते थे जिसमें हम बिग आइडिया बताते थे, और फिर हम टीवीसी का पूरा बताते थे कि शॉर्ट खुलेगा, फिल्म खुलेगी, लड़की पेप्सी पी रही होगी, इस तरीके की पूरा हम बना के उनको प्रेजेंट करते थे. इट वुड गेट अप्रूव्ड and then you would go into production. And in the end जो आपको 30 सेकंड का वो नजर आता था, वो महीनों और कई दफा सालों की भी मेहनत होती थी क्रिएटिव्स और पूरी एजेंसीज की, जो आप बस 30 सेकंड में आता था और आप चैनल स्विच कर देते थे. So that's what I worked on. What happened was that I was working in the corporate for almost a decade, and I can, if we have Gen Zs over here or the very courageous millennials, मेरी बस हो गई थी corporate से. There's a lot of politics involved corporations में, a lot of
हर किसी ऑफिस में होता है यार, टॉक्सिक कल्चर भी आ जाता है. दैट वाज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ एंजाइटी. So one day I just decided to quit with no backup plan. So what happens is that कि आप जब senior position पे भी होते हैं, and I was at a very senior position, it's very difficult to find a job to switch over as well, क्योंकि agencies ही कोई 5-6 ऐसी हैं that you'd want to work on. और उनके पास अगर जॉब्स नहीं होती हैं तो, एंड आई ट्राइड रियली हार्ड कि मैं इस जॉब से दूसरी जॉब में ही जाऊं, बट वो नहीं हो सका. तो मैं स्टक हो गई थी. आई वॉज रियली स्टक और मुझसे काम नहीं हो रहा था. आई एम अ वेरी हैप्पी जॉयल पर्सन. आई वॉज, इफ यू कुड से, द पुप्पी ऑफ बीबीडीओ, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी आते थे डिस्कस करने के लिए, बड़े भी आते थे. मेरे पास लड़कियां आती थी कि हुमा वॉशरूम में लिक्विड सोप नहीं है, तो मैं वो काम करवा देती थी. सो दे वर टेलिंग मी कि हुमा आप नहीं, यू नॉट योर सेल्फ, समथिंग्स ऑफ. एंड आई रियलाइज दैट कि यार, इज इट वर्थ इट कि मैं, आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, मैं खुश नहीं हो रही हूँ यहाँ पर आके. सो आई डिसाइडेड, one day I walked into the office and everyone's like, आप कुछ different लग रही हैं, क्या हुआ है? It's like, I'm quitting today I'm resigning. Like, oh, आपकी job लग गया. And I was like, nope, I don't have a job and I don't care, but I'm not going to take shit from this place anymore. And the thing was, I was a mother at that time. I had a kid. So there were a lot of single girls and boys who were also scared कि यार हम quit करेंगे तो हमारी पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा. But seeing me with a child, not really giving crap about कि अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे, because I was like यार, मैं जिस तरह यहाँ पे weak पड़ रही हूँ, I can't be unfair to myself on that. So I quit, and with no backup plan. And alhamdulillah, मैं यहाँ पे अपना privilege भी बताऊंगी कि I have a husband who has his own architecture practice, and he told me, you can't do this to yourself. You love working, but you, हर सुबह उठ के मैं रोती थी और मुझे उल्टियाँ आती थी. That's one of the anxiety factors that is triggering to me. And he just told me not to work anymore and quit. So for a couple of months, I was literally doing nothing, just chilling, relaxing, spending time with my kid, with my parents. And उस टाइम पे भी मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग क्योंकि जैसे ही हम ग्रेजुएट होते हैं हम जॉब पे पकड़ लेते हैं, और माशाल्लाह से हमारी इकोनॉमी भी ऐसी चल रही है कि हमें कमाना बहुत जरूरी है. बट मुझे अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव उस टाइम पे चेंज करना था. जो हम लोगों ने अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से रिलेट किया हुआ है कि आप जितना प्रोडक्टिव होगे, आपने जितना काम किया होगा या जितना आप कमाओगे, उतनी आपकी सेल्फ वर्थ है. So I had to shift that focus कि my self-worth is not equal to the productivity or the amount of money I make. So that was a good learning scope for me. Enter, I think, January or February early of 2020. Someone reached out to me कि we followed your work and everything, so please आप मुझे क्या कहते हैं, एक ब्रीफ में आपको भेज रही हूँ और आप मुझे कोई आइडियाज दे दें. तो आई सेड ओके, मैं फ्रीलांस कर लेती हूँ उनके साथ. सो मैंने उनको स्ट्रैटेजी बना के दी, डेक बना के दिया, पूरी प्रेजेंटेशन दी. एंड उस वक्त मेरा एक एनसीए का ही दोस्त था, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक के हुमा, वो तो कह रहे हैं कि रिटेनर पे आना चाहिए. अब रिटेनर भी मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता. रिटेनर इज लाइक अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट यू हैव विद द क्लाइंट, कि आपको मंथली हम पेमेंट्स देंगे, एंड फ्री वर्सेस दैट इज प्रोजेक्ट, कि आपको एक लमसम हम दे देंगे और आप ये प्रोजेक्ट 3 महीने में या 2 महीने में या महीने में खत्म कर दें. So I was like, रिटेनर किस बेसिस पे दे रहे हैं, क्या है, कुछ है. So वो within overnight I made my own company called Contentry Incorporated. It comes from the idea of content factory. So मैं TVCs और इश्तिहार बना बना के बहुत तंग आ गई थी कि वही चिप्स यूं खा रहे हैं, वही पेप्सी यूं पी रहे हैं. I was like, it's gone way beyond this advertising. और हम लोग वहीं पे फंसे हुए कि राइट हैंड पे पेप्सी का कंजम्पशन शॉट और व्हाट अ ब्यूटी शॉट आना चाहिए, और बार बार वही शॉट लेके दिखा रहे हैं. There are other ways to sell your product, and let's focus on that. Let's telling a story to people. And उस टाइम पे content बहुत high पे आ गया था. Everyone was watching a lot of content, especially from India. So I started Contentry in February 2020, and I signed my first client, which was Udan, which is a digital committee. उन्होंने committees को उठा के, जो हमारी अम्मी और हमने भी डाली होंगी, उनको digitalize कर दिया था.
So we launched the first campaign with Tamkeenat. She is an influencer blogger, No Filters के नाम से. I don't know if you guys know her, but she's amazing. And हमने अब मैं उसका आइडिया भी थोड़ा सा बता देती हूँ. वही होता है, ब्रीफ आई है आपके पास कि भाई डिजिटल कमिटीज है. अब now I'm trying to also make you understand के how advertising works, so that I heard you have a startup, you would understand के how creatives work and maybe you can make better decisions as the client. So you get a brief जिसमें होता है भाई हमने कमिटीज को डिजिटलाइज कर दिया है. हमारी टारगेट मार्केट आंटीज हैं एंड मैसेज में जो औरतें हैं जो घर में खुद नहीं कमाती बट मियाँ कमाते हैं, लेकिन उन्होंने छोटी 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 कमेटियां इधर उधर डाली, मोहल्ले में डाली हैं, फैमिली में डाली हैं, दोस्तों में डाली हैं. तो हम चाहते हैं कि वो एक ऐप डाउनलोड करें और डिजिटल पर आ जाएं. नाउ अगर आपको समझना चाहिए कि उन लोगों को कैसे आप ये बात बेचें, तो आप उनके माइंडसेट पे जाएं. तो आंटियां जो है हमारी वो सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब पे रहती हैं. दे हार्डली हैव इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप होगा उनके पास, उससे ज्यादा ऐप उनको समझ ही नहीं आती. So for us to tell these aunties to download an app and come and talk about and put your money in an app was going to be huge. कि मतलब हम किस तरह कन्विंस करें इन आंटियों को. तो थोड़ा सा फेसबुक का अपडेट ही आ जाते तो समझ नहीं आ रहा होता है, इंक्लूडिंग माई ओन मदर. So we decided कि हम उनको उस लैंग्वेज में ये बात कम्युनिकेट करते हैं जिसमें वो समझ आती है. So we came up with the idea of baby auntie, and this is before the baby baji came. This was 3 years ago, and we said कि हर घर में एक बेबी बाजी बेबी आंटी होती हैं. आई एम श्योर आप लोगों के भी घर में, मेरे घर में 2 हैं, वो आंटियां बन गई लेकिन उनको हर कोई खानदान में बेबी बोलता है. And we said कि this is going to be our brand ambassador who will teach these women how to come on to this app. और फिर हमने एक कंटेंट पीस निकाला था which was every committee WhatsApp group ever, जिसमें हमने तमकीनत से 7 डिफरेंट जो कैरेक्टर्स नहीं होते आपके कमिटीज पे, एक वो जो हमेशा लेट होती हैं, एक वो जो बहुत ही बूझी सी आंटी होती हैं कि ओ मुझे तो कमेटी का कोई शौक नहीं, मैं तो इसलिए डाला है ताकि आप लोगों से महीने महीने मिलती रहूं. एक वो है जो बहुत प्रॉम्प्ट होती है कि भाई फर्स्ट हो गई है, सब भेजते हैं, क्या मसला है. एक वो होती है जो रोती रहती है, आज इस दफा मेरी बेटी की शादी है, प्लीज मुझे कमेटी पहले दे दें. सो वी हाईलाइटेड ऑल दोज मसले जो एक व्हाट्सएप की कमेटी के ग्रुप में होते हैं. एंड देन बेबी आंटी एंटर्स दैट कमेटी ग्रुप एंड टेल्स देम कि भाई ये मसलों से निजात पाओ और डिजिटल कमेटी पर आ जाओ और आंट पे, जहाँ पे आपको हम मतलब ये मसला नहीं होगा कि कोई अपना चेंज कर रहा है, ये मसला नहीं होगा कि कौन दे रहा है नहीं दे रहा है. चिक चिक पिक पिक उन लोगों की बंद हो जाएगी. एंड द पर्पस ऑफ कमेटी इज टू मेक गेट सम सेविंग्स डन. सो आपने क्या वेयर शी स्पीक्स ऑन आई एम एन आंटी टेरी, सॉरी मैं आंटी हूँ, मैं मानती हूँ अपने आप को. So that's what happened, and it got viral. They got a 75% increase in leads. It was forwarded on WhatsApp, which is how we gauge our viralness. कि अच्छा अगर आपका content WhatsApp forwards पे चला जाता है, तो that means that's good. So that's how my firm started, and then we went into pandemic. But if you think this is going to be a sad story, alhamdulillah it's not, because पेंडेमिक में भी मैंने दिन रात काम किया. आई डोंट नो हाउ, अल्लाह का करम था या मेरी मेहनत थी जो लोगों को नजर आ रही थी, दैट वी kept getting work after work. I worked for Food Panda, I worked for Oppo, I worked for Infinix, I worked for what was this, Snack City के लिए काम किया, Bisconi के लिए काम किया. I was getting briefs from my previous clients as well. Pepsi International reached out to me during pandemic to pitch them ideas. So alhamdulillah, during those 2-3 years, I started making a mark for myself. अब बात आती है awards की. So while I was in BBDO, as any Pakistani girl would have it, मुझे awards का इतना ज़्यादा पता नहीं है. Like I don't know what the awards is. Hold on, just 1 second. अवार्ड्स का हम लोगों को पता ही नहीं होता ना, यहाँ पे तो सिर्फ पास अवार्ड्स एक होते हैं एडवर्टाइजिंग के जो आते हैं. बट व्हाइल आई वाज इन बीबीडीओ, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी. वहाँ पे उनका नेटवर्क इतना सॉलिड था कि उनको पता था कि अच्छा दुबई लिंक्स एक अवार्ड है या एड स्टार्स एक अवार्ड है या क्लियो अवार्ड्स है. One of the most difficult to win are D and AD and as well as Cannes Lions. So
अपार्ट फ्रॉम मेकिंग दोज टीवीसीज जो आप देखते थे, हम लोगों का एक सेक्टर था दैट यूज टू वर्क टूवर्ड्स सम फॉर्म ऑफ सोशल चेंज। तो हमारे पास एबिलिटीज थी टू थिंक क्रिएटिवली, जो हम यूटिलाइज करना चाहते थे टू ब्रिंग सम इम्पैक्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारे तो कहीं भी देख लो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस मुल्क में। तो वी वांटेड टू यूज दैट टू आवर बेनिफिट। अगर आप इंडियन एड्स देखो या इंडियन उनके काम देखो, उनका एक चाय का एक एड, पूरा कैंपेन आया था इलेक्शन से पहले, और चाय का उनका था, आई डोंट रिमेम्बर द ब्रांड, बट उनका चाय का था जागो रे जागो रे जागो। सो उस पे उन्होंने फोकस किया था कि जो वोटर्स है ना वो जाग जाएं और वो उन्हीं को वोट दें जिनका होता है। मतलब वो इतना मजे का कैंपेन था उसमें कि यूथ आके पॉलिटिशियन से पूछ रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, या आपके आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और आप इस हमारे लिए करेंगे क्या। और वो पॉलिटिशियन ना बड़ा वो ऑफेंड हो रहा है कि मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई, मैं मिनिस्टर रहा हुआ या ये रहा हुआ वो रहा हुआ। इट्स लाइक कि भाई आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए और मैं आपको जॉब लगवा के दूंगा अपने वोट से। तो उनका तो मतलब दे वुड हैव सोशली इम्पैक्टफुल कैंपेन्स थ्रू अ टी। हु वुड हैव थॉट कि एक इलेक्शन कैंपेन एक चाय के इश्तिहार से बनेगी, बट वो बनी पूरी। एंड इट वाज रियली पेट्रियोटिक टू सी दैट कि यार ये लोग देखो। और हम यहाँ पे वो ही दिखा रहे हैं कि भाई सबसे हमने ग्राउंड ब्रेकिंग चीज ये की है कि मियाँ बीवी के लिए चाय बना रहा है, उससे ज्यादा हम सोच ही नहीं सक रहे हैं। सो देयर वाज अ section in our office where we focused on problems like these. The first campaign we did was Beat Me, which was a socially impactful campaign. वो हमने UN Women के साथ किया था. In about 2016, there was a law that was passed where it said कि it's okay to lightly beat your wives. और बहुत उसके ऊपर बातें हुई थी, टीवी शोज पे सब आ रहे थे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय लाइटली बीटिंग, मतलब इसकी क्या है कि एक थप्पड़ लाइटली बीटनिंग है या जूता मारना इट वाज सो। हम वही बात है ना कि हम यहीं पे फंसे हुए हैं कि बीवी को कितना मारना इज लॉफुल एंड नॉट लॉफुल, व्हेन द फैक्ट इज के मारो ही नहीं, सीधी सी बात है। दैट शुड बी अनलॉफुल। सो वी डिसाइडेड टू गेट अ कैंपेन जिसमें हमने बीट मी was the campaign name. If you Google it, in fact, I'll share some with Aruj and she can send you a couple of my case studies. So उसमें हम लोगों ने बीच में हमने ये कहा था कि हमने इनवाइट किया था आदमियों को कि आओ कम बीट मी बट एट द थिंग दैट आई एम स्ट्रॉन्ग एट. So for example, if I'm a creative person, I was asking men to come beat me at briefs, creative meetings, creative ideas. And we picked up all these amazing female celebrities from around Pakistan that were doing amazing at what they were doing. So we had Sana Butcha, who was a journalist. So she was saying, beat me with your words, because she writes. So if you want to beat her, तो उसके मतलब writing में beat करें. We had Misha Safi was like, beat me with your voice. Then we had Liari boxing girls who were like, beat me with your face. Because अगर आपने fight ही लड़ना ही है तो उससे लड़ो ना, who's like physically working towards this. And it got viral. It was picked up by Al Jazeera and so many more. And what happens is when international media picks up a campaign and they talk about it, there's some pressure that is felt on the government. And so we did end up becoming part of the process that sort of nullified this bill that was passed. So what I'm talking about is the socially impactful campaign. ये होते थे. इसी तरह के बहुत हमने किए थे. जैसे हमने चाइल्ड ब्राइड्स के ऊपर एक किया था, which was basically कि हमने फैशन के शोज जो होते हैं उसमें हमने एक बच्ची को यूनिफॉर्म पहनाया, उसके यूनिफॉर्म पे गोटा किनारी का काम करवा के उसको शो स्टॉपर बना के चला दिया था फैशन शो पे. एंड अगेन इट गॉट वायरल बिकॉज हमने सिर्फ पीछे एक मैसेज मिला था कि वेडिंग्स are a huge deal in Pakistan, but are all the weddings supposed to be celebrated? क्या हर शादी को सेलिब्रेट करना चाहिए? बिकॉज आपकी 13 साल 10 साल की बच्चियों की भी शादियां हो जाती हैं, they're not supposed to be celebrated. So that was just the question we left with. It got viral. अब वही कॉन्सेप्ट न्यूयॉर्क में, मिलान में ये फैशन शोज हो रहे हैं जिसमें एक बच्ची को यूनिफॉर्म में चलाया जा रहा है कि उसको पढ़ाओ लिखाओ बट उसकी शादी नहीं करो. उसी तरह का एक और हमारा था, which is
I think my biggest achievement was truck art child finder, जिसमें हमने जो ये ट्रक्स होते हैं उनके पीछे आपने देखा होगा कि कायदे आजम की तस्वीर पेंट हुई हुई होती है, या लामा इकबाल की, या आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंट हुई हुई होती है. सो व्हाट वी डिड वाज कि देयर इज नो एजेंसी जो मिसिंग चिल्ड्रन को वो करती है, ढूंढती है. पाकिस्तान में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है. बट देयर इज एन एनजीओ इन पाकिस्तान जो एक साहब है, मोहम्मद अली साहब, वो चलाते हैं. और उन्होंने वो बेचारे, उनका नेटवर्क, यूड बी सरप्राइज उनका नेटवर्क है क्या. उनके नेटवर्क ये पान वाले और ये सिगरेट वाले जो है ना, कॉर्नर्स पे किरियाना इनको हम लोग कहते हैं, छोटी पान की दुकान हो गई, खोखे, उनका नेटवर्क खोखा था. तो उनके पास अगर कोई बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आती थी, वो सबसे पहले व्हाट्सएप इन खोखे वालों को करते थे कि किसी ने इस बच्चे को देखा. एंड यूड बी सरप्राइज कि वो खोखे वाले बता भी देते थे, हाँ ये बच्चा मैंने किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है आधा घंटा पहले. So we got in touch with him and what we did was कि ये जो ट्रक के पीछे तस्वीरें थी, हमने सोचा कि इन तस्वीरों में जिसमें कायदे आजम लामा इकबाल या जो भी बना हुआ है, उसके बजाय अगर मिसिंग चिल्ड्रन की तस्वीरें पेंट करके लगा दें और साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर लगा दें, तो कोई पता नहीं कहाँ कहाँ ये ट्रक्स जाते हैं. खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, साउथ में जाते हैं, क्वेटा में जाते हैं. आपको कोई पता नहीं कि कोई बच्चे का किसी को याद आ जाए कि यहाँ मैंने बच्चा देखा था. बर्जर पेंट्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया था एंड वी एंडेड अप रिलीजिंग 20 ट्रक्स, जिसमें से 7 बच्चे हम लोगों ने ढूंढ के निकाल दिए थे एंड दे वर रीयूनाइटेड विद देयर फैमिलीज. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज योर क्रिएटिविटी to benefit the society. We wanted to do more, but client ko samajh nahi aa raha tha idea, even though we won so many awards on that. So these are the campaigns that make you win awards because they're impactful, they've given results, they have created some form of change in the society. So to date I have more than 300 international awards, which amongst them I have 3 gold line, which are most difficult to get. And because of these awards, I was the highest ranking creative in Pakistan in 2020, according to not our Pakistani, वो international magazine ने ये report publish की थी कि Huma Mobin is the highest ranking creative in Pakistan. So I had all these awards and everything, but मेरा idea यही होता था कि भाई ये impactful काम करके मुझे जो सुकून मिलता है वो एक फोन बेच के नहीं आता. So yeah, that's how I won awards. And ये जाते थे festivals में, हम लोग का network भेजता था हमें. So coming back to this year, I applied. I knew about this C8B8. C8B8 is sort of like a female acceleration program. लेकिन हमने यहाँ पे पाकिस्तान में इतने female acceleration program दिए हैं. But trust me when I say this, it's not like any other female acceleration program. Basically उनका purpose ये था कि it's a male dominated industry. और औरतों का क्रिएटिव लेवल एक नेक्स्ट लेवल है आदमियों से. And it's scientifically proven. I'm sorry, I'm not making statements like these, but I've been to workshops जहाँ पे ये logistics दिए हुए कि women have more insight and more observation skills than men. So जो आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको 2-3 कैंपेन्स के बारे में बताया, जिस तरह कमेटी वाला हो गया, या मैंने बीट मी का बताया, या मैंने ट्रक आर्ट चाइल्ड फाइंडर का बताया. ये ऑब्जर्वेशंस औरतों से ही मोस्टली आ रही होती है कि यार अगर यहाँ पे ये, अगर हम यहाँ पे ये लगा दें तो मतलब दिस कैन हैपन. दीज सो देयर आइडिया वाज के, and they saw around the world, not only in Pakistan but around the world, के women in creative would reach to a certain level और फिर उसके बाद वो आगे प्रमोट नहीं होती थी. क्यों नहीं आगे बढ़ती थी समझ नहीं आ रहा था. तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था फॉर टॉप लीड फीमेल क्रिएटिव्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि हम इनको बुलाएंगे, इनको सिखाएंगे कि अब आप कैसे और आगे बढ़ें. आप CCO विच इज चीफ क्रिएटिव ऑफिसर कैसे बने, या अगर आप पार्टनरशिप डील में जाना चाह रही हैं अपने फर्म के साथ, वो कैसे करें. So they started this program almost 11 years ago. Or I'm not the only Pakistani. There were 2 other female from Pakistan that have gone, who were both my seniors. Hira Mohibullah, Atiya Zaidi, they have gone there. They have represented Pakistan on different occasions, on different years. But this year was mine, and I applied.
एंड उन्होंने मुझे पहले शॉर्टलिस्ट किया, फिर मेरा इंटरव्यू लिया, एंड वो यकीन नहीं आ रहा होता ना, इम्पोस्टर सिंड्रोम की जो मैंने बात की थी कि यार ये मुझे क्यों ले रहे हैं, कहीं इनको डाइवर्सिटी का वो तो नहीं है कि शौक है कि चलो हम एक पाकिस्तान से भी लड़की उठाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, विच हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द वे। बट व्हाट हैपेंड वाज के वहीं पे जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो इट वाज मी हु वाज ब्राउन एंड देयर वाज वन फ्रॉम इंडिया, बिनेफर। हम दो साउथ एशिया से आए हुए थे, बाकी कोई भी बंगाल वगैरह से नहीं था। And 16 girls were selected, like Aruj have told you guys, and I was one of them. और अब सोचा जाए तो खौफ सा लगता है, क्योंकि एक हफ्ता था जिसमें मैं कांस गई थी, कैन कहते हैं उसको लेकिन कांस बोलूंगी मैं। कैन फ्रांस में है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा वो फिल्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं, कैन डे फेस्टिवल, जिसमें दीपिका और ये सब रेड कारपेट पे होती है, उसके एक हफ्ते बाद हमारा ये कांस लायंस फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी होता है। इसका एंट्री टिकट इज ऑलमोस्ट 5,000 euros, एंड जो हम लोगों को ऑफर हुआ था, हम 16 लड़कियों का था, एवरीथिंग वॉज पेड फॉर। हमारा ट्रैवल, हमारा स्टे, हमारा खाना पीना, घूमना फिरना, एवरीथिंग वॉज पेड फॉर। सो आराम से, अगर मैंने जैसे आके अपने मियाँ के साथ हिसाब लगाया था, तो आराम से कोई 35 से 40 लाख का ये ट्रिप था, जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलता है if you're up to their part. They're looking for women in leadership, creative women in leadership roles, and उनके आइडियाज वो सुनते हैं कि इनका आगे करना क्या चाहिए, ये करना क्या चाहती हैं। तो मेरा तो जब से मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की थी एक ख्वाब था, एंड आई होप आई एम एबल टू, एंड अगर आप लोग दुआएं करें तो हो भी जाए, कि आई वांटेड टू ऑलवेज ओपन अ को वर्किंग स्पेस फॉर women, only women. We've seen a lot of co-working space जो co होते हैं and everything होते हैं, but I'm not trying to segregate it. The only thing is that for pandemic में there was a rise in freelancers, especially in women. Huge uprise देखी थी freelancers की। आप लोगों ने भी freelance किया होगा उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया कि, एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स इन माय ओन फर्म, आई ट्राई टू हायर एज मेनी वुमेन एज पॉसिबल, स्पेशली मदर्स, एंड नाउ माशाल्लाह से आई एम अ मदर ऑफ 2 girls, and I know it's very difficult, let alone Pakistan, but in the world, after my experience as well, कि एक मदर को फिर से जॉब में आना या वापस से स्टार्ट करना, उसके अपने खुद इतने डाउट्स होते हैं, और फिर इर्द गिर्द के आपके ऑफिस वाले भी आपको डाउट ही कर रहे होते हैं कि यार ये माँ ये कर सकेगी। मैं, हमारे तो इंटरव्यूज में डायरेक्ट पूछ लेते हैं यार कि आपके तो 2 बच्चे, आप किस तरह मैनेज करेंगी, एंड दैट्स इलीगल बाय द वे। आई होप यू गाइस नो दैट अकॉर्डिंग टू international laws, it's illegal to ask in your interview whether you're married, whether you're going to have babies or not. It's unlawful, because I don't think किसी आदमी को कभी पूछा होगा कि आपके तो 4 बच्चे, आप किस तरह मैनेज करेंगे। आपका 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आप देख लें कि ये औरत कर सकती है कि नहीं, नहीं होता आप निकाल दे, लेकिन आप पूछ नहीं सकते किसी से कि आप किस तरह मैनेज करेंगी, बिकॉज वो आई है, वो यहाँ पे सोच के कुछ आई है, उसको चांस दें, ट्राई करें। इफ इट डजंट वर्क आउट, यू कैन ऑलवेज tell them कि भाई 3 महीने बाद it's not working, and that's fine. So I noticed that, and I wanted to make a space for women where they can just come and just have that peace in mind, क्योंकि freelancers as women, and I've worked this, I'm having a meeting with the CEO of Food Panda, and my mom would come in and she's like, चाय पीनी है या तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, and I'd be like, भाई एक मीटिंग चल रही है। Meanwhile, my brother has a recording studio in our house, और अम्मी का यही हाल होता था, खामोश, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। I'm like, ये मतलब, and my parents are pretty intelligent and educated people, लेकिन उनको भी नहीं रियलाइज होता वो ये क्या कर रहे थे। So that's when I realized कि एक माँ या एक औरत घर में अगर बैठी हुई फ्रीलांस कर रही है ना, तो उसको 10 दफा टोका जाएगा, चाचा है बेटा जाके चाय बना दो, अरे बेटा मेहमान आए कर दो, अरे ये देखो मासी को देख लो, अरे ये कर दो वो कर दो। सो वो एक फ्रीलांसर अगर लड़की घर में बैठी काम कर रही है, वो उसको वो स्पेस ही नहीं मिलती टू वर्क। सो दैट वाज द आइडिया कि अगर मैं को वर्किंग स्पेस फॉर वुमेन बनाऊं, जहाँ पे एक बेबी का एक रूम भी हो, सो इफ देयर आर मदर्स कमिंग, दे कैन पुट द kids in the room, there will be nannies over there, there will be cameras there, and वो एक सेफ विसिनिटी में काम कर सकें। दूसरा रीजन ये था कि
I do have a small following on Instagram, and I would come across women who would be like, we want to work with you, लेकिन मेरे अब्बू इजाजत नहीं दे रहे, मेरा भाई इजाजत नहीं दे रहा काम करने की. एंड आज वो यही होता था कि जितना मैंने प्रोब किया, पूछा है, वो यही होता था कि बाप भाई सिर्फ यही बोलते थे कि तुम अब आदमियों के बीच में बैठ के काम करोगी. सो आई वांटेड टू गिव दैट स्पेस कि वो लड़की बोल सके नहीं, औरतें ही हैं सारी वहाँ पे, तो आदमी तो कहीं है ही नहीं, मुझे प्लीज काम करने दें. For it's very important for a girl to be financially independent, and I think जितना हम उस लड़की को कहीं पे भी help out कर सकें. So that was why I wanted to have a co-working space, but economy के हालात आप सबने देखे, मैंने उसकी branding की, सब कुछ की. The day I was going to launch, rent up हो गया था, and I couldn't go for that goal. So this was couple of things that I talked about in my application, that's what I want to do for women in Pakistan. One of the main reasons I'm having this talk is because I know there are so many creative women in Pakistan, and most of you don't know about this C8B8 program, which is looking for women coming from difficult backgrounds, unko help karne mein, unko idea dene mein, unko to give them connections from all over the world कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं. तो वो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे दे शुड गो टू कांस लाइन्स की वेबसाइट पे, एंड वहाँ पे उनके लेटर से सब्सक्राइब करें. जनवरी में उनका आता है, बट इफ यूर अ क्रिएटिव वुमन प्लीज डू अप्लाई एंड कीप अप्लाइंग. मैं पहली अटेम्प्ट में नहीं शॉर्टलिस्ट हुई थी, मेरे 2 अटेम्प्ट थे. आई एम द हाईएस्ट रैंकिंग क्रिएटिव इन पाकिस्तान. मुझे 2 दफा उन्होंने रिजेक्ट किया था, तीसरी दफा इन्होंने एक्सेप्ट किया है. सो डोंट टेक कि हाय रिजेक्ट हो गई, ये हो गया. एवरी ईयर I'd बी देयर कि हाय मैं रिजेक्ट हो गई, मेरे में क्या कमी है, मतलब ये क्या ढूंढ रहे हैं जो मेरे पास नहीं है. बट एवरी नेक्स्ट ईयर I'd be like I'm going to get it this time. So don't, please I will send all the links, Khatija, to Aruj, all the things, so you guys can please. I would love, मैं मतलब मैंने अमेरिकन 3 लड़कियां देखी थी वहां पे, तो मुझे मैं जो हमारी इंडियन मेरी दोस्त थी, मैंने कि यार हमारी आबादी ज्यादा है लाइक इन लोगों से ज्यादा है, तो 3 इंडियन या 3 पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकती. तो उससे कि मे बी होगा, तो मैं यही करना चाहिए, जाके वहां पे इतने लोगों को बताओ इस प्रोग्राम के बारे में कि नेक्स्ट टाइम C8B8 में 4 पाकिस्तानी लड़कियां घूम रही होंगी. तो एक तो आपको वहां पे ले जाके टॉक्स देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात की, डोंट बी हम्बल, ये हमें सिखाया जाता था कि यार अपनी पर्सनालिटी में ये चीजें लाओ, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल प्रोग्रेस इन योर करियर. सिमिलरली उन्होंने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, विच वर लाइक फेक इट टिल यू मेक इट. कि बेसिकली हमें होता ही है ना कि हमें कोई ज्यादा औकात से बाहर कोई चीज ऑफर आ जाती है. आई रिमेम्बर मुझे कभी किसी ने हेड ऑफ ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, और मैं डर गई थी. मैंने कि यार ये क्या है, although I know branding, although I've done so many things, but I was still so scared कि मुझे करना चाहिए, मैं कर सकूंगी नहीं, यार रहने दो, शायद उन्होंने तुक्के में बात कर दी है, I don't think I can do it. But ये टॉक्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आप पहले जॉब एक्सेप्ट करो and then learn it on the job and see if you can do it. मना करने से आप अपनी ग्रोथ रोक रहे हो. You need to accept it and then do it, because that's what everyone does, by the way. Let me just tell you, anyone you look up to has done this at some point of their life, where they were offered a role they had no idea about, they don't know how they were going to do it, they accepted it, they learned it on the job and then excelled in it. So my suggestion to everyone, boys and girls, would be कि कोई ऐसा रोल आ जाए आपके पास, या ऑफर ऐसी आ जाए कि आप थोड़ा सा भी डाउट कर रहे हैं, यार कूद के देखो मैदान में, maybe you could excel in it, and maybe not, you walk out with a lesson. So that's what I wanted to tell you guys about me. And yeah, so I came back from Cannes, और 2 बच्चों के बाद अकेले जाना, घूमना फिरना वहां पे, meeting so many people from different nationalities. अच्छा, एक और मैं I'm not trying to toot my horn, I'm just trying to tell you कि मैं अपने आप को एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान समझती हूँ, बिल्कुल. Like I even consider myself housewife, even though I'm running the agency from my home.
बट वहां जाके ना आपको थोड़ा सा अपना रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं कुछ 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 तो उखाड़ रही हूँ दुनिया में, कुछ तो डिफरेंट कर, कुछ तो मेरे अंदर है बात। द फर्स्ट डिनर जब मैं रीच की हूँ वहां पे, और वाज के 3 लड़कियां आके मेरे सामने बैठ गई जो सीएड बीएड प्रोग्राम की थी। एक टर्किश थी, कोरिया से थी, और एक एलए से थी, अमेरिका से। और उन्होंने बोली हुमा, वी वांट टू टॉक टू यू। और मेरी पैक हो गई थी कि यार ये बोलेंगी कि तुम्हारा तो बनता ही नहीं है, तुम क्यों आई हो यहाँ पे या क्या है। मैंने कि अच्छा पूछो। एंड दे लाइक यू नो यू हैव 2 daughters एंड you're रनिंग योर फर्म एंड you're विनिंग अवार्ड्स, ये कैसे कर रही हो। तो मुझे ऑनेस्टली इतनी कोई बड़ी बात नहीं लगती। और आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, जितनी भी औरतें हैं ना, वो इतना आराम से ये काम कर रही होती हैं, बी एट अ हाउस वाइफ, बी एट अ वर्किंग वुमन, बी एट अ मदर, हुएवर इट इज, वो इतना सब कुछ इतने आराम से कर रही होती हैं कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, लाइक मैं तो काफी देर से कर रही हूँ इसमें कोई। बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग एंड दे वर लाइक कैसे, यू नो बिकॉज वी आर मैरिड और वी थिंक अबाउट किड्स, लेकिन हमें समझ नहीं आता हमारे करियर पे इफेक्ट कैसे पड़ेगा, हाउ डिड you decide to have babies and all that. And I was like, यार मैनेज हो जाता है। Obviously I told them about the privilege that I have a nanny. I do have both sets of grandparents, so they help as well sometimes. But I realized that running a firm and raising 2 children and taking care of the house is something I should be very, very proud of, because not everyone can do that. And these were like top female creatives of the world who were asking me for advice about that. कि किस तरह करती हूँ, किस तरह मैनेज करती हूँ, क्या होता है। तो while giving them advice, मुझे अपने अंदर ना कि कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि यार मैं बहुत कुछ करती हूँ। So that was the first night when I was told कि this is huge what you're doing by the girls. This entire हफ्ते में हम लोग we came across industry leaders जो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे होते थे कि भाई आपने जिंदगी में क्या किया। And when I would start with my thing, I have my own firm, I have 300 international awards जिसमें से 3 गोल्ड लाइन है। वो वहीं रोक देते, एक सेकंड होल्ड ऑन, you've done all this, and I'd be like हाँ। And then you know they'd be like that's huge Huma, like that's huge. और फिर जब मैं बोलती थी माँ हूँ 2 बच्चों की, तो वो बहुत इम्प्रेस होते थे कि यार पाकिस्तान में से ऐसे भी लोग ये काम कर रहे हैं। सो अवार्ड्स तो मैंने बीबीडीओ के साथ जीते, बट एक मैंने कैंपेन किया था ऑन ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन अपनी फर्म के साथ, and that got 4 awards, and it got a shortlist in Cannes Lion as well. So that's huge for my firm of 3 years to win awards on international space. But I did, and I'm raising 2 daughters, alhamdulillah, and trying to make a living in this economy that just keeps going up and down. Yes, Hajra, it should be normalized, but I'm saying that it needs to glorified rather than normalized, that if a woman is doing all of this, क्योंकि हम लोग उसको इतना internalize कर लेते हैं कि हाँ यार ठीक है, अब जैसे मीटिंग आई हुई है, I've given my kid to the nanny, मुझे पता है कि यार उसको खाना खिलाना है, उसको ये करना है, मुझे ही करना पड़ेगा। But you know, like to understand that that's a thing, that's an issue, that why do I, if my husband was over here giving a live session, he wouldn't be thinking about the kid, because उसको पता है कि उसकी माँ उसका पैम्पर भी धो लेगी, चेंज भी कर लेगी, नहला भी देगी, खाना भी खिला देगी, बाहर भी ले जाएगी, घुमा भी देगी, और वो उसका डे प्लान आउट कर लेगी। But for me to sit over here, do this, and keep a head over there, it needs to be glorified, because I am doing that. It needs to be talked about. So yeah, so this is my story. This is what I experienced. And one very important thing that I want to say to the men and the women over here is kindness. मैंने इतना प्यार और इतनी काइंडनेस वहां पे देखी, और मैं प्लेन में बैठी यही सोच रही थी कि हमारे कल्चर में हम सिर्फ नेगेटिविटी पे थ्राइव करते हैं। how to put that one down, how to put this one down. हमने एक gossip culture, which shamefully I am a part of it as well, कि किया हुआ है। लेकिन वहां हम लोगों ने ना gossip की ना कुछ की, we were just talking about, you know, एक दूसरे को pump up करते हैं ना, जिस तरह cheer leaders होते हैं, यार you've done this। मैं वहां पे 3 लड़कियों के दिमाग में ये बात डालकर आ गई हूँ
Sarah, you are going to make a firm of your own. Bernice, you're going to do. How will I do it? How will I? You can do it. How about you do this? How about you do that? Look, this is how I started. The point is कि वहां पे एक वो जो होता है ना एक दूसरे को to build each other up. That was massive. वो एक environment. मैं खुश थी वहां पे. मैं वहां पे मतलब मेरे जितने भी followers थे वो कहते थे आप पाकिस्तान में कुछ और लग रही थी, वहां कुछ और लग रही. मैंने कहा बेटा वहां पे जब उठ के ना बोतलों और पैम्परों का नहीं ख्याल रखना तो obviously ग्लो तो आना ही था. But apart from that, it was the kind of women that were around me, the kind of people that were around me that were talking so, you know, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. अब वो बात अलग है कि भाई आप जब बाहर बैठे हुए हो और आपने एक टका नहीं दिया इस चीज के लिए और आप बस एंजॉय कर रहे हो तो एक पॉजिटिविटी तो वैसी होती है. और वहां के लोगों का ही अलग मिजाज होता है. इकोनॉमी उनकी कहाँ जा रही है, टूरिज्म उनका कहाँ जा रहा है. उनके ये मसले ही नहीं चल रहे कि अब जैसे 15 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे यूनिट पे पीक आवर्स में. ये उनके मसले ही नहीं है, उनके मसले ही कुछ और है. तो आई डू गेट दैट. But what I want to tell you guys, all the men and the women over here, एक दूसरे को build up को, especially women around you. Do you know there's a Google study, and Arush would remember this, कि when there are women in leading positions, the productivity of that company increases by 70%. और आपकी 42% population औरतों की है, that is untouched. If you can imagine कि अगर हम औरतों को leading roles पे डाल दें तो वो कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते. If you remember हमारे floods आए थे last year, I think last year, a year before that, and there was ACP थी मेरे हाथ से पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की ये कुछ थी. You saw those videos जो वो घर से घर जा रही थी दुपट्टा ओढ़ के और लोगों को निकाल रही थी, निकलो यहाँ पे फ्लड आएगा. And I was like, this is what a woman can do, which a man up till now has never done in a position of power. कि वो लोगों के घर से घर, हर घर का कुंडी खटखटा के निकाल रहा था, निकलो. वो औरत थी, उसको पता था ये लोग नहीं निकलेंगे, मुझे ही जाके निकालना होगा, उनको बताना होगा, उनकी औरतों से बात करना होगा. So you really need to understand that. Build your women around you. Don't bring them down. Build yourself, build people around you. आप देखो एक काइंड एक्ट या किसी को चेयर करने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको तो इम्पैक्ट करेगा ही, बट उसको भी इम्पैक्ट करेगा. ट्राई टू बिल्ड अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप्स अराउंड यू. क्योंकि ये बहुत बड़ा मुझे पाकिस्तान में फील हुआ है और मैंने भी आके अपनी कंपनी पे भी ये अप्लाई करना शुरू किया है कि अगर एक लड़की नहीं सही से काम कर रही तो रादर देन बैठ के यार इसने ये नहीं काम किया, देखिए हुमा इसने, मैंने इसको कब का कहा था ये नहीं किया, मैं उस लड़की को बुलाती हूँ, उससे पहले पूछती हूँ कि भाई what's going on, is something bothering you, तुम्हारे personal कुछ issue. If you don't want to discuss, that's fine, but I need to know okay, if you're lacking in your work, is it because of something? So I've started doing that. So please, if nothing you can take from this talk, just take the fact to be kind to each other, to build a positive environment. God knows कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, at least हम तो positive एक दूसरे को कर सकते हैं ना. So yeah, that's my thing. I'm open to questions and whatever you guys want to talk about. Just to add to that, Aruj, हमारा agencies में एक होता है कि अगर जब हम आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपके जो है ना क्लाइंट जब इनसाइट पे बोलते हैं ना, ये पीछे वाला आता है ना, you've nailed it, आप आगे प्रेजेंटेशन दो, your idea is sold. मैं अभी इन लोगों को थोड़ा सा एक दो एग्जांपल इस तरीके से दे देती हूँ. आपकी insight, you're talking about relatability, in our terms it's called an insight. Basically insight वो होती है जो एक बंदे को पता भी ना हो कि वो ये करता है, लेकिन वो होती है, और that's our job as creatives to identify it and link it to the brand. फॉर एग्जाम्पल 7up का हम लोगों ने एक इंसाइट बहुत मैसिव क्रैक की थी, लेकिन वो कभी हो ना सकी. was basically, and I would please raise your hands if you feel this way or not, because we got that in the meeting room and we knew the idea sold. Okay, if you're a foodie, the most difficult thing for you to do is to wait for your food to come. जब आपने ऑर्डर दिया होता है, from that time to the food coming to your table,
आपके लिए वो बहुत ही मुश्किल लम्हा गुजरा। हर वेटर की हर प्लेट पे आप देख रहे होते ये मेरा खाना आ रहा है, ये मेरा खाना आ रहा है। सो दैट्स एन इनसाइट जो सब एवरीवन एक्सपीरियंसेस, बट इट्स आवर जॉब टू आइडेंटिफाई। सिमिलरली इसी तरह की ऐसी इनसाइट हम लोगों ने, अब एक बहुत बहुत डिफिकल्ट ऐप मैंने रिसेंटली लॉन्च की थी, विच इज दिल का रिश्ता, which is the Rishta app. I don't know if you guys have seen the ads. They were everywhere. It's a young group की startup है. So they hired me as a consultant और वो इतना difficult था रोज, because वो ऐप देखें, रिश्ता कल्चर आप जैसे मुझ ने अपने लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने कहा इतने लड़के हैं और तुम अभी भी अकेली हो और ये है। I get it, they were speaking to Gen Z, but I'm sorry, in Pakistan रिश्ते में पुप्पी की नानी का, चाचे का, कुत्ते का भी अप्रूवल जरूर चाहिए होता है। यू कांट डिनाई द फैक्ट, रिश्ता इज अ फैमिली अफेयर। कितने हमारे रिश्ते, हमारे इर्द गिर्द देख लो, जितने भी वो फैमिलीज, उनमें फैमिलीज का अप्रूवल बहुत जरूरी है। सो टू लॉन्च अ रिश्ता ऐप इन अ कल्चर लाइक पाकिस्तान, वी हैड टू टॉक टू टू ऑडियंसेस। एक आपके माँ बाप जो आपको पता है किस तरह होते हैं रिश्तों के मामले में, एंड देन दूसरे जो टारगेट प्राइमरी ऑडियंस है, विच इज द पीपल हु विल बी गेटिंग मैरिड। मेरा सर फट गया था, आई वॉज सो स्टक कि मैं किस तरह एक इंसाइट निकालूं जो एक जनरेशनल गैप को खत्म कर दे, बूमर्स और मिलेनियल्स का या मिलेनियल्स और जेनजी का, ये किस तरह होगा, क्योंकि इतने हम लोगों के डिफरेंसेस हो गए। But we did crack an insight, my team and we sat together, and the insight was very simple. And I'm sure, please raise your hands again, कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक माँ का ताना या बाप का ताना पड़ता है कि ऐसे ही रहोगे तो दूसरे घर में जाके नाक कटाओगी, या तुमसे शादी कौन करेगा, ये हरकत जो टॉन्ट पड़ता है ना, कि मतलब पूरा वक्त बाहर का खाती रहती हो, दूसरे घर में जाके क्या करोगी, बाहर से ऑर्डर करोगी। That taunt is where you connect the generation, the parents and the kids together, कि वो बात करते हैं दूसरे घर की और दूसरे बच्चे को भी पता होता है कि दूसरे घर की बात हो रही है। We took that and we made 4 different ads around that, जिसमें एक लड़की जो है ना, हमने ये भी नहीं दिखाया कि बिल्कुल ही घरेलू से, हमने जैसे लड़की को दिखाया कि वो ट्रैवल करती है, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम घूमते फिरते ही रहना, हो जाएगी इस तरह तुम्हारी शादी। तो उसने कि हाँ करूंगी ना शादी, अम्मी जब से खुश होती है। अच्छा, कहती है हाँ वर्ल्ड टूर के बाद। तो कहती है कौन करेगा इससे शादी। देन वी शो देयर इज अ गाय समवेयर इन द वर्ल्ड हु आल्सो लव्स टू ट्रैवल एंड दे कैन कनेक्ट ऑन दिस रिश्ता ऐप एंड मीट दैट। सो insights can have to come from your cultural relevance, from your society, and you have to be very observant. You can't say कि भाई हम बहुत cool हो गए और भाई हम लड़की जो है ना मुझ पे रिश्ता ढूंढेगी और बता। आई विश वी वर, इट वाज अ डिसीजन दैट मेन एंड वुमेन कैन मेक अलोन ऑटोनोमसली, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी ये हमारी। So, to answer to Hajra's question first, yes, you're right. Lahore and Karachi has massive opportunities. I'm sorry, but had it been, again, I keep bringing guys and girls ka comparison, but I just want the boys to realize that they do have the privilege कि आज अगर लड़का सोचे कि यार पिंडी में ज्यादा opportunities नहीं है, चलो मैं कराची apply करता हूँ, उसको 10 दफा सोचना नहीं पड़ेगा, as compared to Hajra over here who would have to think about कि भाई पेरेंट्स से परमिशन लूंगी, वहां कहाँ रहूंगी, सेफ है कि नहीं है, किस तरह होगा। I would, my guidance to you would be ke reach out to LinkedIn is huge, by the way. Please, I know मैं भी बहुत उसको downplay करती थी, लेकिन वहां पे अगर आपको कोई बंदा मिलता था कांस में तो वो आपका LinkedIn पूछता था, आपका ना Instagram handle ना WhatsApp number ना कुछ नहीं, LinkedIn, what's your LinkedIn? So LinkedIn पे reach out to a couple of people, DM them, message them कि hey, I'm Hajra, I work from Pindi, I have this much of experience. Portfolio को Linktree पे compile कर दो. This is what I worked on.
Here's, if you are interested, please let me know. I would love to forward you my CV. I would love to work with someone like you. I followed your work. मतलब थोड़ा सा आपको ना उठाना भी पड़ता है उनको कि हाँ भाई आप ही को मैं जानती हूँ और ये है वो है. So start reaching out to people if you can move. I would say I don't want to be the person who's like कि नहीं move कर जाओ वहाँ पे, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल चोरी रहता, आप बोले देखो हुमा ने बोला था move कर जाओ ये हो गया. You have to weigh out your pros and cons. We can't deny the fact you're a woman in Pakistan. Going over there, if you have relatives, थोड़े महीने उनके पास रह के figure out वहाँ पे live in, वहाँ कराची का थोड़ा सा next level है, even लाहौर से भी. वहाँ पे you have a lot of single girls living together, like दो दो तीन तीन एक घर की एक फ्लोर पे रह रही होती हैं, as compared to लाहौर. लाहौर में जो single लड़कियों को वो घर भी देने से कतरा रहे होते हैं या देते ही नहीं है, by the way. So it's a different city, but I would say Hajra, if you want to learn, if you want to progress, Karachi, मैं कराची की हूँ, and it is उसका pace of life भी different, उसका professionalism ही बहुत different है. And I've lived my life in Karachi. I've been in Lahore for 20 years plus, but मेरा वो यहाँ पे फिर भी ना एक fresh take रहता है. जब भी मुझसे लाहौरी clients मिलते हैं कहते हैं आप बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं. कि भाई काम करना है, पैसा कमाना है, निकालो जल्दी जल्दी काम करो. So if you learn those ethics from Karachi, it's going to benefit you a lot. There are more opportunities. You have more people networking with you. I would say that. Or if you want to go step by step, you could come to Lahore, find a firm that has a office in Lahore, and in Karachi, there's AdCom. Reach out to AdCom, try to reach out to creative directors in these firms. कि I'm looking for opportunities. AdCom का कराची में भी है, लाहौर में भी. वीडियो जहाँ पे नहीं उनका भी ऑफिस कराची में भी है, लाहौर में भी है. तो एक प्लान रखो कि यार अच्छा ठीक है, मैं ना पहले शिफ्ट करती हूँ कराची लाहौर, और फिर मैं ऐसी फर्म में जाती हूँ जिसका ऑफिस कराची में, तो फिर मैं उधर से उधर शिफ्ट होने की कोशिश. लाइक कीप दैट प्लान इन माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. गो टू योर, और ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चुप बैठे हम्बल, नहीं, बॉस को भी जाके बताओ कि आपने मुझे ये काम किया था लेकिन मैंने इसके अलावा ये भी कर लिया है. एंड टेक दैट compliment from them ke, oh very good Haja, thank you so much. No sir, I'm working towards this because I have a plan in mind and मैंने तो बहुत कुछ achieve करना है. I want to be independent. So ताकि उनके दिमाग में रहे कि ये लड़की इसलिए नहीं काम कर रही कि बस काम कर रही है, इसका कुछ दिमाग में प्लान है, मुझसे आगे जाके कुछ मांगेगी. And later on you can go and tell them कि you know sir, I've been thinking about it, I want to move to Karachi, so please let me know if there's any opportunity available because मेरा प्लान का हमेशा से कराची ही मूव करने का था. मेरी फैमिली है वहाँ पे, जो भी एक पेंट कर देना पिक्चर और बस बोलना कि मुझे कराची की तरफ जाना है. तो अगर हमारी फर्म में नहीं आप किसी को जानते हो या कुछ हो, सो जस्ट कीप गोइंग, पुशिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट. आई होप एंड आई प्रे कि एक दिन मुझे हाजरा से मैसेज आया कि हुमा मैं कराची में पहुंच गई हूँ. एंड यू नो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. मैनिफेस्ट जरूर करो. आज ना रात में सोने से पहले अपने आप को देखो कि यार मैं एक 3 लड़कियों के साथ शेयर करते हुए एक अपार्टमेंट में कराची में रह रही हूँ और अच्छी सी टॉप पोजीशन पे बैठी हूँ. व्हाई नॉट. Thank you so much, Huma. I really needed this push, and I'm definitely gonna do that. Hopefully, inshallah. And to answer your question, Aruj, ke culture versus learning. I'm an advocate for mental health. If you followed me, I've talked about my depression episodes. I've talked about anxiety. I want to normalize it because nobody talks about it. Especially after a baby, आपको postpartum depression होता है. हर कोई बात कर रहा है अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है, क्यों रो रही हो? But you can't control what your brain thinks. So I come from that ideology. For me, I really tried to make it work, but I couldn't. I'm a very sensitive person. I will speak about my behavior, my opinion. मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे सुन के बोले कि नहीं यार ऐसे ही होता है, ऐसी टॉक्सिक कल्चर चलते हैं, and I just need to like suck it up and keep doing it. I don't want the key message to be that because you have to prioritize your mental health. अगर as creatives especially, if I'm not happy, मैं कुछ ढंग का नहीं सोच सकती, मैं कुछ इंसाइट नहीं निकाल सकती. मुझे मजा आना क्रिएटिव फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट. जिस तरह आर्टिस्ट को कहते हैं ना कि दे नीड टू फ्यूल देयर सोल, इट्स द सेम फॉर क्रिएटिव्स एज वेल. अगर आप अच्छी जगह में नहीं, अच्छे माहौल में नहीं हो, पीपल आर ब्रिंगिंग यू डाउन, टॉक्सिक वर्क कल्चर चल रहा है, आप कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकते. which is why massively agencies in Pakistan are not producing good work because
वो एनवायरनमेंट ही नहीं है टू बिल्ड ईच अदर अप, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जिसमें हम अपनी मीटिंग्स में बीबीडीओ में जो हमारा टी बॉय था पत्रस, उसको भी बिठाते थे कि यार तुम भी बैठो, तुम भी इनसाइड दो, बिकॉज वी हम हर किसी को वो क्रेडिबिलिटी देते थे कि यार आइडिया कहीं से भी आ सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. But I say I've learned this from Kans, which I'm going to pass on, is कि give yourself a deadline, an expiration date. कि मैं इस फर्म में 6 महीने काम करूंगी और देखूंगी कि ये चेंज होगा नहीं होगा, या इफ आई गेट यूज टू इट और नॉट. और वो 6 महीने जब आप अपने आप को टारगेट दे देते हो ना, तो आपका एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बननी स्टार्ट हो जाती है, प्लान बी, which is basically you reaching out to other firms, talking about it. और आपने जब 6 महीने का एक्सपायरेशन लग दिया ना, तो आप शायद अपने बॉस से जो पहले डर रहे थे डिस्कस करने में कि यार आप ये बातें कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मे बी आपने जब 6 महीने का दिया हो तो आप कम्युनिकेट भी कर लो बॉस से. And you can please talk to your superiors, but do it. बदतमीजी नहीं होती है, हम लोग बात सब कर सकते हैं हर किस्म की. मैंने रेसिज्म के बारे में भी एक लड़की से डिस्कस किया था, लेकिन मुझे तब तक अंदाजा हो गया था यार प्यार और काइंडनेस से आप बात करो तो आप कुछ भी कह दो. तो मैंने उसको, आप अपने बॉस को बोला कि सर और मैम, देयर समथिंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, एंड बी प्रोफेशनल. इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, but you know, the way you put me down, the way you micromanage me, I'm a little not comfortable with it. Do you think we can work something out? Can we talk about this? How do I go about it? I really like working with you and I want to learn from you, but these things are sort of, you know, becoming a hindrance between our relationship, professional relationship. How do we go about it? उसी के ऊपर डाल दो कि भाई तुम बताओ कि क्या हो. अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक होगा ना, and I'm going to tell you this that I've learned as well, कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है ना, तो वो बोलेगा कि सो यू, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज फॉर यू, लाइक दिस इज हाउ आई एम. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर देयर. You sit back, you tell this person, so you're telling me that I've come to you with a problem with a problem that I have, and you're my superior who should help me fix that problem, but you're not willing to because you're saying hey, this is just who you are and I should just suck it up to it. When you lay down the facts na, ek bande ko samajh aate ki how ridiculous do I sound, and just let it sit over there. And then you, agar ek bande ko nahi change karna to wo nahi karega, so you have your exit plan ki main 6 mahine baad nikal jaungi. So then you say to this person ki okay, let me think about it, because this doesn't seem like the place or a mentor I'd like to have, who doesn't want to consider my issues a problem that he should solve, because आपके manager को आपकी problems को solve करना चाहिए. That's part of their job description, by the way. So if your manager is saying no, I'm not going to solve your matter, they are lacking on their job. So you tell them you are lacking in your job if you're not going to solve my problems, because that's your job to manage me and you're not managing me. So do that. 6 महीने साल अपने आप को टाइम दो, उसमें try to figure out, communicate. नहीं वर्कआउट कर रहा, start working on plan B, reach out, LinkedIn, talk to people, start moving. So मैं ऑनेस्टली मैंने ये एडवाइस वहां पे गोरों को भी दी हुई है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्यों नहीं समझ आती है. I wing it as I go. So there was this girl from LA, Bernice. She is an Asian, ठीक है, Chinese थी वो, and वो ना फ्रीलांस काम करती थी, and उसको इतना डर था अपनी फर्म चलाने से. तो मैंने उसको एडवाइस दी, मैंने कि भाई तू फ्रीलांस कर रही है तो अपनी फर्म के इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पेज बना, जो भी काम फ्रीलांस करी वो अपने पेज पे लगा दो, तो पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा फर्म का, और तुम फ्रीलांस भी करते रहे. कौन बोल रहा है कि कंपनी है कि नहीं है. सो कैन आई टेल यू दिस, अभी तक आई हैवंट रियली रजिस्टर्ड माय कंपनी बिकॉज दे आस्क फॉर माय फोन नंबर and my phone number is not registered to my name, it's still on my dad's name, so I'm being lazy about that. But the thing is that if you want to start working towards it, I would say, and we have to be realistic यार, पाकिस्तान में इकोनॉमी का जो हाल, इन्फ्लेशन रेट का चल रहा है, मैं क्या बोलूं किसी को कि हाँ भाई नौकरी छोड़ो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो. I have to be realistic.
I would say wherever you're working, start freelancing, start reaching out to people. Hey, you know, I was looking for freelance work. Do you have any? Let me know. Once you start freelancing, आपका एक थोड़ा सा ना बेस बन जाता है clients का, और उनको पता भी चल जाता है. So when eventually you do start on working on something on your own, you can reach out to these people. कि भाई मैंने अब finally अपनी firm start कर दी है. Please, if you have any briefs, send it over my way. I would love to have a crack at them. उस ट्रेजेक्ट्री पे निकलने से पहले थोड़ा सा अपना बेस वर्क इस तरह कर लें. मैं बता रही हूँ, आई वाज प्रिविलेज्ड. आई विल एक्नॉलेज माय प्रिविलेज कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय हस्बैंड वाज फुली वर्किंग. ही कुड हैव सपोर्टेड मी इवन दो आई हैड किड्स. वी कुड हैव मैनेज्ड इट. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो बिजली का बिल या ये सब चीजें पूरी कंप्लीटली मुझ पे या मेरे हस्बैंड पे उस तरीके से नहीं आती. इट कैन बी डिवाइडेड, कैन बी सॉर्टेड आउट. सो यू हैव टू फिगर आउट दीज थिंग्स. बट आई वुड से कि अब वो टाइम आ गया है पोस्ट पैंडेमिक दैट एवरीवन इज ऑलमोस्ट थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन थिंग. मतलब आप इतनी मेहनत एक एजेंसी के लिए करो जो मिलियंस में रिटेनर उठा ले. What's stopping you from doing that for your own self and making millions yourself? मेरी सीधी सी ये मतलब एक लॉजिकल. दिन रात आप एक कर रहे होते किसके लिए? अभी मैं दिन रात एक कर रही होती हूँ ना, तो मुझे सुकून होता है कि यार पैसे मेरे पास ही आने, कहीं और नहीं जाएंगे. मुझे एक तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, जितना मैं इसमें मेहनत करूंगी उसका फल मुझे ही मिल रहा होगा. सो keep working towards it. Start working on some base of remote or freelancing का. बहुत by the way बड़ी पेप्सी हो गई या कुछ हो गए हैं post pandemic, they are okay with giving freelance work, by the way. So reach out, LinkedIn, message, talk to people, reach out. मतलब you don't know the idea or the power behind LinkedIn. अपनी प्रोफाइल को बार बार अपडेट करते हैं. LinkedIn का मतलब ये नहीं कि सबको कनेक्ट भेज रहे हैं और DMs कर रहे हैं. मेरे पास भी कनेक्शंस आते हैं, मैं प्रोफाइल पढ़ती हूँ, मैं पोस्ट देखती हूँ. सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन दोस. लाइक हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स टिकटॉक के होते हैं, देयर आर इन्फ्लुएंसर्स ऑन लिंक्डइन एज वेल. सो एटलीस्ट keep posting about it. Oh, I love this campaign. Yeah, for example, I'm not saying do this, but you know, like, oh, had a talk with Huma, what a wonderful, and I loved her campaign like this. तो एक जो भी जिसको आप डीएम करेंगे वो देखेगा कि अच्छा इस बंदे के पास या इस बंदी के पास ये इन चीजों का पता है. कान लाइन के कोई कैंपेन शेयर किए हुए हैं, बाहर के शेयर किए हुए, तो उनको होगा कि it's not just all talk and no work. This person has done a lot of things. And when you connect with these people and you keep posting stuff on your LinkedIn, तो उनकी भी न्यूज फीड में बार बार आ रहा होता है. एंड कहीं ना कहीं आप दिमाग में रह जाते हो किसी के कि यार ये बंदी कैंपेन्स बहुत अच्छे शेयर करती है, शी हैज डिफरेंट व्यूज ऑन दिस एंड आई लव दैट शी शेयर्ड हर वर्क ऑन इट. सो I would suggest go for it this way. It's very important in the current times to start your own thing. It's very important. So do that. Love the people, and just not only just girls, just boys as well, to tell them how to be inclusive of these women and, you know, support them in any way possible, please.